वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे रेशियो एनालिसिस की, ठीक है। और ये क्लास है हमारी बीकॉम फाइनल ईयर की और सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें हमने रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फंड फ्लो एनालिसिस की, ठीक है। तो फंड फ्लो एनालिसिस होता क्या है कि फंड फ्लो एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फंड फ्लो एनालिसिस वो स्टेटमेंट होती है जिससे जो हमारे पास एडिशनल फंड्स हम कहां से कलेक्ट करें और उनका कहां हम यूज करें उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। या उसके बारे में हम पता लगाते हैं वो चीज कहलाती है आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है, दूसरा होता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो आप सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसकी, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें देखिए फॉर्मेट हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां जाएंगे आपकी प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। इधर आ जाएगा करंट ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, और इधर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके वर्किंग कैपिटल में कैसे जाती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स के बारे में देख लेते हैं, करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या चीजें हमारी करंट एसेट्स में आती है। देखिए सबसे पहले आ गया आपका कैश इन हैंड, नेक्स्ट आ गया आपका कैश एट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सन्ड्री डेटर्स, नेक्स्ट आता है आपका बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, नेक्स्ट आता है आपका कोई इसके अलावा भी कोई अदर करंट एसेट्स हैं वो आ जाता है, अदर
लायबिलिटीज का डिक्रीज हुआ पिछले साल क्या थी इस साल क्या, ठीक है। तो करंट एसेट्स में कैश इनवेंट, एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट्स, बिल्स रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक इन ट्रेड और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये चीज किस में आ गई आपकी करंट एसेट्स के पार्ट आ गई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज का, करंट लायबिलिटीज में जो ये चीजें आती हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, अब इसमें देखिए करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट आ गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर आ गए आपके बिल्स पेबल, देन आ गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। फिर आ गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट आ गया आपका अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बी पोर्शन। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कर देंगे, वर्किंग कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये चीज किसमें काउंट हो गई आपकी शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, वर्किंग कैपिटल चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। करंट एसेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटीज में क्या आपका सर्टिफिकेट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करंट लायबिलिटीज। जो क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे पास आएंगी और आपकी नॉलेज में इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसके बाद ठीक है, इसमें देख लीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका सोर्सेज ऑफ फंड, नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमाउंट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमाउंट। तो इसमें देखिए ये आ जाता है आपका फर्स्ट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो ये है। नेक्स्ट आता है आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल, नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम। नेक्स्ट आता है आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी जिसमें आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किसे आते हैं आपके फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट आता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपका परचेजेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये होता है आपका क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें देख लीजिए है क्या, ये हमारी की फॉर्म है। ठीक है, मतलब एक तरफ आ गया आपका सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरी तरफ आ गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं और किस तरीके से किस कौन से सोर्सेज से हमारे पास फंड आ रहे हैं और कहां वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट आता है आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इनकम, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है आपके फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, redemption of debentures, payment of long-term investment, purchase of long-term investment, payment of dividend, payment of tax, increase in working capital। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ गई आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। पहली क्या था आपका शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा है हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेस लेक्चर। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, so this is sufficient for today's class, so thank you students।